Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved today and what is the outlook we can expect for tomorrow. First thing first, कल हमने कहा था कि the data is neutral, but market direction is still inconclusive and we are not sure about how the market might move, and we wanted to wait for some time, and that is what we concluded. We did discuss that there is a slight negative bias, but overall seems to be pretty neutral. We were actually, we were waiting for this directional move today, but let me tell you one thing. Overall data standpoint, from position standpoint, market is very light. मार्केट में कोई बड़ी पोजीशन किसी भी डायरेक्शन की नहीं है, ठीक है. बारिंग कपल ऑफ पॉइंट्स हियर एंड देयर, वहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन मार्केट में नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस की तरफ नहीं है. मुझे नहीं पता, दिस माइट बी अ इम्पैक्ट पोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ इंक्रीज इन एसटीटी, तो हो सकता है कि ओवरऑल वॉल्यूम में एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा हो, बट इट इज मार्केट इज वेरी लाइट. मार्केट अभी लाइट है, तो इसके it means that the possibility for it to go down is also very high, and possibility for it to touch its resistance is also very high. ये इसलिए ऐसा लग रहा है कि आर्बिट्राजेस जो थे ना, अब उनके लिए ये कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, उनके लिए ये कॉस्ट ऑफ arbitraging has increased because of increase in STT. So that is something which is negative for the market, not very positive, and consequently overall volume has declined. And I was reading a report where I saw that even NSC is probably invariably trying to reach out to finance minister with a request of decrease in STT, and various exchanges have also probably written to finance minister that this doesn't augurs well for their business, and overall volume might face some down headwinds. So to revise the STT, that is what our sense is, and that is what we are reading it in the from the media. What is what we are picking up from the media. So we can see direct impact on that. There is no big positions, but let us come to the market now. Market is that हमें ये लग रहा है, what we feel here is 25,700 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है हमें on the downside, और there is a gap here. आप ये गैप देख रहे हैं, there is a gap. अब गैप तक यहाँ पे जब तक 25,700 को ना तोड़े, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि 25,700 का ही लेवल नहीं है. मार्केट इज क्लोज्ड एट अराउंड 25,800, तो यहाँ पे हमें एक 25,700 के आसपास एक बेयर केस सिनेरियो लग रहा है कि इन अ बेयर केस सिनेरियो probably we might touch 25,700 levels, because that is the gap and that needs to be filled. लेकिन अगर आप एक घंटे के कैंडल पे देखें तो there were multiple attempts for market to pull up, but then it was all sold. ठीक है, और ये सोल्ड कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं हुआ है, मॉडेस्ट वॉल्यूम में ही हुआ है. सो ब्रेस फॉर दिस कि अगर बेयर के सिनेरियो होता है तो 25,700 तक एडवेस्ट जा सकता है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो एनी फर्दर फ्रॉम देयर ऑन. निफ्टी लेकिन जब ऊपर की तरफ टिल टाइम इट ब्रेक्स 25,900, इट इज टफ, इट विल डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू इंच अप. ठीक है, वी विल डिस्कस द डेटा एंड देन probably we'll judge the bias. Now Nifty Bank is again the same. Nifty Bank is relatively positive than Nifty, and it is ideally supported by SBI and ICICI. अब SBI में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है और ICICI में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है. So we do not know how it's going to play out tomorrow, sorry. But on the downside, what I feel is that 60,500 is a very strong support, क्योंकि hourly candle पे काफी बार इसने इसको टच किया है, so reversal ही हुआ है. Though we are still 200 points far away from 60,500, तो 200 पॉइंट का बफर हमारे पास है, बट हाँ 200 पॉइंट यहाँ पे एक आपका एक सपोर्ट है. अगर उसको तोड़ेगा ना, देन वी स्टिल हैव अ गैप है. यू सी यहाँ से सीधा गैप अप यहाँ पे गया, तो वी स्टिल हैव अ gap of around 60,100. Now that is difficult for now in the given terms. 50 उसके पहले आपका 50-day exponential moving average आता है. अच्छा, ये सारा जो प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है ना, it is because of Nifty IT. Let me try and pull up a Nifty IT chart. Just give me a second. It is a massive breakdown of Nifty IT. अगर मैं आपको दिखाऊं ना, probably you will get shocked. ये देखिए, this is Nifty IT on an hourly basis. ये एंथ्रोपिक का जो एक नया सॉफ्टवेयर आया है, मतलब दे उनका नया टूल, नया अपग्रेड आया है, उसमें क्या है कि दे आर इंट्रोड्यूसिंग a mechanism by which there is something they are going to change the entire tax system. Tax कहने का मतलब है कि people who were managing all these affairs of collecting tax and calculating tax and everything, so they are going to do that simulation in probably less than 1 minute. So if that comes to, lot of the jobs are going to be at risk. I'm not trying to stretch it beyond a point, but yeah,
द पॉइंट इज कि काफ़ी सारी जॉब्स पे आपको खतरा देखने को मिल सकता है, बट सेकंड इज कि हमारी आईटी कंपनीज आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेवल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, वेयर यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है, एक ऐसा एक टूल बनता है जहाँ पे जाने के बाद एंथ्रोपिक का, जहाँ पे all the processes are going to be automated, it's become very very easy and very very fast. So probably the fear is that our companies do not, our IT companies do not have that much of efficiency in terms of creating this kind of tool or this kind of programs and all those. That is the reason why nifty IT is down this much. अगर मैं आपको, let us talk about a yearly basis. On a yearly basis, if you see, this is massive, this is massive, I mean it's absolute wreckage. आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। आप अक्टूबर 2025 तो चला ही गया, यू आर नियरिंग 25 का लो, अप्रैल 25 अप्रैल 2025 में, अप्रैल में जो लो बनाया था ना, उसके आसपास का आप एक, यू आर जस्ट अप्रोचिंग दैट यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, मतलब अगर आप उसको ऐसे करेंगे, बिकम्स, देखिए 50 डे को तोड़ दिया, एज इफ इट डजंट मीन्स एनीथिंग। तो दिस इज पुटिंग लॉट ऑफ pressure on nifty as well, क्योंकि after banks, IT has the biggest or highest weightage in nifty index. So this is the pressure point, that is what it is. अगर आप इसके साथ banks वगैरह सबको बेचना शुरू कर देंगे, then तो you are gone। ये pray to God that probably the banks were sane today, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला, दो हमने देखा है कि HDFC बैंक में शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। So these are the levels to mark for. I mean, at 60,500. If that is breached, then probably we might expect first level is 60,300 and followed by 60,100. ठीक है. Let us come to the data set. Now, data set here is, it's giving an indication of a थोड़ा सा negative bias बढ़ रहा है, but overall position is very light. ठीक है, it's not very high. यहाँ पे हमने देखा है कि institutions के shorts बढ़ रहे हैं futures में, but लगभग फ्लैट या थोड़ा सा काफी मार्जिनली एफआईएस का शॉर्ट्स बढ़ा है, डीआईएस का लॉन्ग कम हुआ है, प्रो का शॉर्ट कम हुआ है, और क्लाइंट ने थोड़ा सा, मतलब स्टेटस को ये हल्का सा उन्होंने अपना लॉन्ग को कम किया। सो दिस डज गिव्स एन इंडिकेशन दैट प्रोबेबली, देखिए ऊपर जाने का चांस तो काफी कम लग रहा है एट बेस्ट, इफ यू व्हेन लुकिंग एट डेटा एंड एवरीथिंग। कैश में एफआईएस हैव बॉट अराउंड 100 करोड़, ठीक है। ओवरऑल सेटअप रिमेंस निफ्टी फॉर सेटअप रिमेंस नेगेटिव फॉर निफ्टी, and if we just look at the OI build up, then probably we will see that यहाँ पे देखिए, यहाँ पे you will see all these green call writers here, but then no support, substantial support of put writing. तो आप देखिए 25,700 is the next pit stop for Nifty, and if that is breached, then probably we are open for 25,500. We will have to see, because 25,500 has been very good support for quite some time, but then yeah, we should be watchful for this. The overall data setup remains negative. If you look at Dow today, for now, for some reason Dow is up for some US sales data and all, jobless claim data and all, तो उसके कारण देखिए, but yeah, देखिए Dow Jones ऊपर है, but I do not expect it to have any influence on our market. Why? Because overall setup remains negative. तो 25,700 पहला देखिए, if that is breached, then probably there can be some chance of Nifty probably racing to 25,500 levels. That is our analysis for today. Hope you would have liked it, and I request you to kindly click the like button, and if not subscribed, then please subscribe the channel. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.